to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किस लीगल केस में फंस गए हैं टीवी एक्टर करणवीर बोहरा? किस तरह से celebs और फैंस ने किया रिएक्ट ऑन ब्रह्मास्त्र ट्रेलर? किस इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर ने की तारीफ उर्फी जावेद की? कौन से बीटान सेलेब्स हैं जो कि क्रिएट कर रहे हैं बज़ ऑन सोशल मीडिया? मैं जानता हूं आप सब इस मूवी का काफी टाइम से वेट कर रहे हो और मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूं आप सबके रिस्पॉन्स के लिए. एक्चुअली अंदर से मर रहा हूं. आई डोंट इवन नो इफ आई विल एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक ब्रह्मास्त्र अगेन. We have given our blood, sweat, time, heart, soul, liver, kidney, सब कुछ दे दिया है to make this film. And I truly hope and pray that it excites and delights and engages you guys. So I guess it's the right time to say, अब खेल शुरू. ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को मिला सभी का प्यार. नेटिजन्स ने रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ऑन स्क्रीन पेयरिंग को कहा हिट. नीतू कपूर और सोनी राजदान ने भी ट्रेलर को प्रेस किया. रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर फाइनली आउट हो गया है. फिल्म के ट्रेलर में रणबीर कपूर आलिया भट्ट की हॉट केमिस्ट्री के साथ वो सभी कुछ मौजूद है जो इसे एक स्टेलर फिल्म बनाता है. द फिल्म स्टार्स रणबीर कपूर एज शिवा, आलिया भट्ट एज ईशा, अमिताभ बच्चन एज गुरु, नागार्जुन गुरु एज अनीश and Moni Roy as Junoon. The film revolves around an intense love story set against the backdrop of fantasy fiction world. इस फिल्म का VFX वर्क भी काफी कमाल का है जो फिल्म के विजुअल्स को और भी रिच बनाता है. ट्रेलर में रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ब्रेथ टेकिंग केमिस्ट्री के अलावा अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर भी ट्रेलर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है. मोनी रॉय जो एक सिनिस्टर हैं in the film perfectly traces out the darker side of Junoon. Overall, trailer is worth the wait, जिसे रिलीज के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से फैंस तक सभी का खूब प्यार मिल रहा है. Well, yes, रणबीर कपूर की मॉम और आलिया भट्ट की मदर इन लॉ नीतू कपूर ने जहां फिल्म के ट्रेलर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, वहीं सोनी राजदान also jumped to the comment section to express her excitement about the trailer. She wrote, "Oh, how absolutely amazingly stunning." Several other celebs, including Bhumi Pednekar and Ritesh Deshmukh, also reacted to the Brahmastra trailer. वहीं फैंस ने कमेंट्स करके अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की और बताया कि हॉलीवुड भी इस फिल्म के सामने फेल है. दिस इज सीरियसली वर्ल्ड क्लास फिल्म. VFX आर ब्रेकिंग ऑल द रूल्स एंड बाउंड्री. हॉलीवुड भी फेल है. एक यूजर ने लिखा, I have no words for this VFX. What do you think about? दूसरे यूजर ने लिखा, The trailer is just fantastic. Does not reveal much of the plot and keeping the antagonist's power in suspense is just bang on perfect. The VFX looks great too. With this magnanimous star cast, I think we are in for a very own superhero universe. Applause to that. Eagerly waiting for the release to experience the magic of the Astras on the big screen. India has a lot amazing stories and concepts and fabulous culture. So happy to see that Bollywood now is making a movie out of it. And it cannot be compared with Marvel because it's unique and just amazing in its own way. I got goosebumps watching this trailer. Amitabh Bachchan, Nagarjun, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt and Moni Roy is just... Can't wait for movie. Another wrote. रणबीर कपूर आलिया भट्ट के फैंस ने तो ट्रेलर के साथ साथ इसमें रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ऑन स्क्रीन पेयरिंग को भी थम्स अप दिया और शिव और ईशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फिल्म रिलीज से पहले ही हिट कर दिया. देखिए नेटिजन्स के कुछ ट्वीट्स जिसमें सिर्फ रणबीर कपूर आलिया भट्ट की हॉट केमिस्ट्री की ही बात हो रही है. बता दें इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है जो सितंबर 9th, 2022 को 5 इंडियन लैंग्वेजेस हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में रिलीज होगी. I'm kind of obsessed. Yes. Yes.
इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर हुए उर्फी जावेद के स्टाइल से इम्प्रेस। उर्फी जावेद ने हैरिस रीड के डिजाइन से इंस्पायर्ड आउटफिट की कैरी। उर्फी जावेद की आउटफिट है वर्ल्ड फेमस। इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर हैरिस रीड हुए उर्फी जावेद से obsessed। I'm kind of obsessed. Yes. Yes. उर्फी जावेद के बिजार सेंस ऑफ स्टाइल को उन्होंने दिया थम्स अप। उर्फी जावेद जो अक्सर अपने आउटफिट्स को लेकर ट्रोल होती हैं और नेटिजन्स के निशाने पर बनी रहती हैं को ब्रिटिश अमेरिकन फैशन डिजाइनर हैरिस रीड ने प्रेज किया है और उनके सेंस ऑफ स्टाइल को ऑब्सेसिव बताया। Recently, Urfi Javed was snapped wearing a one-of-a-kind dress. She wore a black mini dress which also featured two hands holding a loop in the center of the chest. उर्फी जावेद की ये आउटफिट इंटरनेशनल डिजाइनर हैरिस रीड के डिजाइन से इंस्पायर्ड है। बता दें, हैरिस रीड इज फेमस फॉर हिज यूनिक डिजाइन्स एंड इनके डिजाइन्स कई फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटीज सच एज एमा वॉटसन, हैरी स्टाइल्स ने कैरी किए हैं। ऐसे में जब हैरिस रीड ने उर्फी जावेद का ये लेटेस्ट वीडियो देखा जिसमें उर्फी जावेद ने उन्हीं के डिजाइन से सिमिलर एक ड्रेस कैरी की थी, तो उन्होंने अपने इंस्टा पर इसे शेयर करते हुए उर्फी जावेद को appreciate किया। Harris Reid in a video said, "This girl is clearly very famous who remade one of my show looks and has 45 million views. It is very obsessive and I'm really obsessed." वैसे उर्फी जावेद सिर्फ अपने इस बोल्ड आउटफिट की वजह से ही न्यूज में नहीं बनी, बल्कि इस आउटफिट को लेकर दिए एक बयान की वजह से भी वो खूब छाई हैं। देखिए एक रीसेंट इंटरैक्शन के वक्त जब उर्फी जावेद से इस स्टाइल के पीछे का आइडिया पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। I just wanted extra hands to support me today. That's it. मेरे दो हाथ बहुत थक चुके थे। उर्फी जावेद के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी बातों को डबल मीनिंग कह रहे हैं। हालांकि उर्फी जावेद शायद ही किसी की बातों को कुछ इम्पोर्टेंस देने वाली है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नेटिजन्स ने उन्हें टारगेट किया है। वहीं उर्फी जावेद ने रिसेंटली इंटरव्यू विद एन एंटरटेनमेंट पोर्टल में बताया उनका मंत्रा टू डील विद सोशल मीडिया ट्रोलिंग। Urfi Javed said, "That's the thing. I do not have to handle it. Why should I handle it? It's not for me to reply to anyone who doesn't like me. If you don't like me, good for you. People don't even like their own kids. How they are supposed to like me? I cannot expect everyone to like me. I don't care much about people liking me or not." फिलहाल तो उर्फी जावेद इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर से मिले अप्रिसिएशन को सिंक इन करने की कोशिश कर रही होंगी। एक कंट्रोवर्सी में फंसे करणवीर बोहरा। करणवीर बोहरा के अगेंस्ट रजिस्टर हुआ केस। करणवीर बोहरा पहले भी कर्जे में डूब चुके हैं। पॉपुलर टीवी एक्टर करणवीर बोहरा पर लगा एक आरोप। एक वुमन ने क्लेम किया है कि करणवीर बोहरा ने पैसों को लेकर उनके साथ की धोखाधड़ी। वैसे तो करणवीर बोहरा टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है जिनकी फैन फॉलोइंग भी काफी लंबी है, लेकिन रिसेंटली एक्टर करणवीर बोहरा के अगेंस्ट मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया गया है फॉर allegedly duping a 40-year-old woman of rupees 1.99 crores after promising her a return at 2.5% interest. करणवीर बोहरा के साथ 5 और लोगों का भी नाम इसमें शामिल है और इन सभी के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है। The woman has claimed that only an amount of over rupees 1 crore was returned. The woman also claimed that when she asked for the amount, Bohra and his wife Tajinder Sidhu did not respond properly and threatened to shoot her. एक न्यूज एजेंसी ने ट्वीट करके लिखा, केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट 6 people including actor Manoj Bohra alias Karanvir Bohra for allegedly cheating a 40-year-old woman of rupees 1.99 crores after promising to return it at a 2.5% interest. Woman claimed that only an amount of over rupees 1 crore was returned. Oshiwara PS. The woman also claimed that when she asked for the amount, Bohra and his wife Tajinder Sidhu did not respond properly and threatened to shoot her. Police have started an investigation and will soon record their statements. Oshiwara Police Station.
आपको बता दें कि एक्टर करणवीर बोहरा लास्ट कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में नजर आए थे। इस शो में करणवीर बोहरा ने अपने दिल के कई राज खोलते हुए ये भी बताया था कि ही इज इन डेट। Karanvir Bohra said, from 2015 to right now, मैं जो काम लेता हूँ वो चुकाने के लिए। I feel so sorry for myself and for my family. What am I giving them? अगर मेरी जगह कोई और होता तो he would have committed suicide. He also revealed that there were 3 or 4 cases against him for not paying money back, जो अब उन पर नहीं है। ऐसे में अब एक और नया केस करणवीर बोहरा के अगेंस्ट फाइल किया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है एंड विल सून रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट्स। जी मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे सारे नखरे उठाएगा। राखी सावंत को हो गया है फिर से प्यार। राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया ये वीडियो विद टाइटल ही इज माई ट्रू लव और इस वीडियो में वो बता रही हैं कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए जिससे वो शादी करेंगी। हैव अ लुक। देखो जी मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मेरे सारे नखरे उठाएगा, मुझे प्यार करेगा और जब कभी भी मेरा झगड़ा हो उसके साथ तो वो मुझे ढेर सारी चुम्मियां करेगा और जब कभी मैं गुस्से में रहूं तो ऐसे हाथ जोड़ के पीछे कार चलाएगा, सैल्यूट मारेगा और मुझे बहुत जगह घुमाएगा। अर्जुन कपूर ने शेयर किए कुछ न्यू पिक्स एंड वीडियोस विद हिज लेडी किलर को-स्टार भूमि पेडनेकर। जैसे ही अर्जुन कपूर ने ये वीडियो शेयर किया, फैंस स्टार्टेड पुलिंग हिज लेग एंड टैग्ड हिज गर्लफ्रेंड मलाइका अरोरा। इस पोस्ट को शेयर करते हुए अर्जुन कपूर ने लिखा, आफ्टर 45 days of shoot, a failed attempt at getting some killer once by the lady and the lady killer. ट्विंकल खन्ना को लोग जानते हैं फॉर हर ह्यूमर एंड विटी अंदाज और ये अंदाज नजर आया इन हर लेटेस्ट वीडियो। ट्विंकल खन्ना ने एक वीडियो शेयर किया शोकेसिंग द हाईलाइटिंग द स्ट्रगल ऑफ बीइंग अ मदर। टेक अ लुक। कमिंग अप ऑन द शो, शी सीजन 2 के राइटर एंड क्रिएटर इम्तियाज अली ने किया जूम के साथ एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me the cast and makers of She Season 2. Imtiaz, I was looking at your filmography as a director and on an average, the time between 2 of your releases is about 2 years. I don't know how or why, but that's sort of the kind of gap that there is. Do you think that that's how long it takes to make a truly special film, somewhere in the back of your head, like? No, I don't think so. I think it just like, I wish I wasn't the writer of the films, you know. I wish that other people were right, because writing also takes time, and if I have to write it and then direct it and then it takes that much time, you know, and that perhaps is also the reason I wanted to get into production and do shows where I'm not directing, so that many of the things that I want to do, many stories that I want to work on can be made. Sure. Because I take at least 2 years, etc., to make one film, and that's never going to be good enough to finish the list that I have in my mind in my lifetime. I would like to direct more and more now, especially because in the pandemic I didn't get the chance to direct too much. I want to direct more and more films now, and perhaps more frequently than once in 2 years. I just want to say that and on this thing, Jab We Met was greenlit in March and it released in October. Right. So it was like it was lightning. Quick turnaround. Yeah, and he was like literally shooting through the day and writing more the dialogues. He was refining dialogue, working through the night, shooting in the day, working through the night, and that is how I think he shot all of Jab We Met. Candidly just asking, since you said that writing takes a lot of time and that's also why it takes you that long, why don't, like, are you looking at like sort of outsourcing that part of it and like just sort of? Well, I can't completely outsource because there has to be a vision. So I have to collaborate or be a part of it. I'm always looking for wonderful, great writers to come in and collaborate with me. But it's not going to be very simple, I've realized. Like, much as I want, I can't just give it up and say,
तू दे It दे is your फिर baby मैं- at the end of the day. Kinda. Because if you direct, then you direct everything. Especially the way I have been working, then you have to direct the script as well. Sure. Just like you direct an actor. So yeah, but I'm now also, because I did She and another show and I collaborated with other writers, I also am looking forward to collaborating with other writers on my films. Arif, what would you say are the pros and cons of having someone as highly regarded as Imtiaz, as the showrunner and writer of your show, and then also of him also being your brother? Like pros and cons, and really tell me the pros and cons. Sure. I revel such opportunities. So the pros first is that you're assured a certain quality. I know when I'm getting it, I look at it very seriously, and I know that. And when I'm very happy to see a certain quality of material. And the con is that he is extremely particular, and so you have to live up to that also. You cannot do, you can't just give any kind of a reason that उस दिन ऐसा हुआ कि आदिति को जाना था जल्दी या आदिति वैन से निकली नहीं. Usually that is. ये एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? All those reasons will not hold. Whatever the problems are, that will always be there, in any shooting. Sure. But what you ultimately see in the footage that you get, I mean, the thing is that you have to be that good, otherwise you're going to get an earful. Did you give earfuls often? No, I had this other comment, which is very helpful, to say that, oh, was this the problem? It rained? Okay, so let's put a subtitle, guys. Hey, viewers, since it rained, we have come up with a very bad scene for you. Kindly tolerate and make do. Oh, so that's my comment. That's got to be tough to work with on a set. Sounds tough even now. In the same vein, I want to ask you both, what are some things or aspects of filmmaking that you guys sort of don't see eye to eye on about, or you argue about? And just maybe one or two examples. I think we had an argument sometime back, like yesterday we were talking about... Sometime back like yesterday. About the kind of shows that we are going to see in the future, and Arif was saying that I think... you did not let me finish. I didn't let you finish because the point is, it's no point, see, we are writers, we are not analysts, right? We're not like, our responsibility is to do what comes to our minds and to do the best job. If somebody asks us for a certain type of show, we must make that kind of show, right? We can't go around and say, I think this is the trend. I think this, according to this chart and this trend in Hollywood, in year so on and so forth. Arey yaar, you have a story, you write the bloody story and make it, na? What's the point of analysis? So this. See what I mean? What would you like to say in rebuttal? Please tell us. Aamir. Imagine doing this, doing 2 seasons of this. Oh man, what about you from your end? Where do you guys not see eye to eye? Give something back. This is the time. Today morning we were having a chat. Yeah, some time ago, when we were having the tea together. Just before this interview. No, we see eye to eye on most matters. I don't think there is anything that we don't. But I think whenever I try to bring in a worldview or a perspective different from his, there is a conflict. Arif is the planner. He likes planning more than execution. You should go on a holiday with him sometime. You know, he's only planning the holiday. Holiday with the two of you. We've been on holidays together. And then he's not looking up from the guidebook. You're going to tell me your story now, what happened in France. He's not looking up from the guidebook. And he says, bhaiya, I'm driving. Right mein na ek palace aane wala hai. And I'm like, oh. And I see the palace and I say, wow, what a splendid palace. Arif, look. And he's like, yeah. He's more interested in the map.
You know, he's that kind of guy. He wants to plan so well. Thank you so much for joining me, guys. It's been an absolute pleasure. Good luck for everything ahead and hope to do this again soon. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.